नमस्ते देवी और सज्जनों, मैं संतोष बात कर रहा हूँ और आज मैं स्थापत्य अभियांत्रिकी या सिविल इंजीनियरिंग की बातें छोड़कर आज मैं आपके सामने YouTube के बारे में बताने जा रहा हूँ. इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग YouTube स्टूडियो डेस्कटॉप वर्जन to download on your mobile or a tab of Android वर्जन. ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है. मैंने इसके लिए मेरे 4-5 घंटे YouTube चैनल पर बिताए, लेकिन मुझे कोई अच्छा तरीका वीडियो से प्राप्त नहीं हुआ. उस कारण मैंने सोचा कि मुझे जो तरीका अपनाने के लिए मिला है वो तरीका मैं आपके सामने पेश करूं, तो आप लोगों को भी आपके मोबाइल पे या टैब पे आपको YouTube स्टूडियो का जो डेस्कटॉप वर्जन है वो यूज़ करने के लिए मिले. और ये डेस्कटॉप वर्जन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये डेस्कटॉप वर्जन के ऊपर आपको सब इन्फॉर्मेशन अप टू डेट करने का चांस मिलता है, जो पॉसिबिलिटी आपको YouTube स्टूडियो के ऐप पर नहीं मिल सकती है. इस कारण मैंने ये लेक्चर या व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए सोचा. तो आप लोगों को मेरा नम्र निवेदन है, आप यूट्यूबर है या आप YouTube में रुचि रखते हैं, तो ये मेरा व्याख्यान अंत तक देखें, तो आपको YouTube स्टूडियो के डेस्कटॉप वर्जन के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी. और ये जानकारी आपको आपके YouTube चैनल के लिए, आपके वीडियोज़ के लिए बहुत ही उपयुक्त होगी. तो चलिए ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपके मोबाइल के ऊपर गूगल क्रोम ढूंढना होगा. सो आई एम गोइंग टू सर्च दैट गूगल क्रोम, बट बिफोर दैट you have to remove that YouTube Studio app from your Android or a Android version of mobile or a tab. We have to uninstall that, okay? Because if you have that mobile app on your mobile or a tab, then it is not possible to open that desktop version on the screen of mobile or tab. But after getting that certain link from your mobile, you can use that YouTube Studio app also, and you can use also a YouTube Studio desktop version. तो उसके लिए सर्वप्रथम आपको YouTube Studio का ऐप आपके स्क्रीन से निकालना होगा या अनइंस्टॉल करना होगा. तो सो आई एम गोइंग टू अनइंस्टॉल दैट यूट्यूब स्टूडियो फ्रॉम माय टैब. देन आई एम गोइंग टू दैट क्रोम साइट. सो आपको क्रोम साइट पे जाना होगा और क्रोम साइट के ऊपर आपको m.YouTube टाइप करना होगा. सो आफ्टर ओपनिंग दैट m.youtube.com site, you will get that 3 dots on the top, and you have to open that 3 dots and you have to go to that desktop site, which is already opened here. If it is not open, you have to open in such a fashion, or you can again go to that 3 dots and open that desktop site, okay? After opening that desktop site, you have to go to your channel that is favorite. So you have to open that channel and you have to go, आपको YouTube Studio के ऊपर जाना होगा और you have to go to the tab of YouTube Studio. We have already removed the mobile app of YouTube Studio. So this site is going to direct you on that YouTube Studio desktop site, okay? This is the desktop site or desktop version of YouTube Studio, and you can you have that content here, playlist here, YouTube analytics here, YouTube monetization is also seen.
monetization here, customization here, and you can use that various options to customize your channel from that YouTube Studio desktop site. Okay, then you have to go to that link and you have to share that link, okay, to WhatsApp. After sharing that link, you can, आपको लिंक मिल गई होगी एंड आप वो लिंक पे जाएंगे. इफ यू प्रेस दैट लिंक, you directly goes to YouTube Studio desktop version, and which is very useful for you to customize your channel or to edit your videos and other things. So this is very simplest way to obtain the YouTube Studio desktop site on your tab or mobile of Android version. After that you have to go to Play Store also, and again you have to install that YouTube Studio. So search for apps and games. You have to go to that YouTube Studio site, YouTube Studio app, sorry. You have to find that YouTube Studio app on Play Store for Android version. So this one is the YouTube Studio. Okay, you have to install that on your tab or mobile. It will take certain time depending upon the your internet connection. If it is fast, it is installed earliest. If it is slow, it will take certain time to install that YouTube Studio app on your mobile or a tab. And this YouTube Studio app also very important for getting quick information regarding your analytics of the videos you have posted on that YouTube channel. After opening that YouTube Studio app, you have to get it started, and again you have to choose your channel or you have to choose your favorite channel. After that choosing your favorite channel, you get the analytics and other details on that YouTube Studio app. So right now I have YouTube Studio app on my mobile version as well as YouTube Studio desktop version. I obtained it from the link. So I am again trying that link. Okay, so I have to go on the WhatsApp and I have to check that link which is pasted earlier. I have to open that link. And after opening that link, you will get the YouTube desktop version on your tab or a mobile of Android version, and also you have that YouTube Studio app of desktop version also as well as YouTube Studio mobile app also. So it is very useful for the YouTubers. It is also useful for all beginners. So once again I am requesting you to subscribe my channel as early as possible, and also press a like button if you are interested in my lectures. Till then, bye bye, good night, and please again requesting you to subscribe my channel as early as possible, so you will get certain ideas regarding